Hi guys, so today the day is 14th of August and tomorrow being Independence Day, I am going to Punjab. That's a different story. It was like this time it's a long weekend, so I am going there. So the reason I'm recording this vlog is 11:30 a.m. right now, and I got a train at 11:30 p.m. in the evening from Roorkee. Currently I am in Noida. So yeah, I'm going to shoot this a vlog for my future and see how tiring this day would be. Yeah. So the time is 5:22 right now, and I have left Noida, my office, and I'm stuck here on red light. It's 41 seconds more to go. How long will it take from my home? And tomorrow being National Day, 15th of August. So let's see how the day goes. Yeah, cheers. Hi guys, so time is paune 11 right now. My train is at 11:24 and I'm just leaving home. My parents are going to drop me. Just carrying out this one bag because it's going to be a great journey. So I'm will vlog up like this right now. Say so yeah, let's see. I'm very excited. I'm going almost after a year. Last year I went in the month of September. This time it's August, and yeah, Amritsar is always a blessing. So just stay tuned and let's see how it goes. So I've reached on the railway station, and railway station of Roorkee has changed a lot. It's under redevelopment since past 1 year. I don't know for how long will this continue. So yeah, let's see. अभी time क्या हुआ है? Time is 10:55 right now and my train is at 11:20. So I'll have a walk either for a little while. तब तक के लिए तक ट्रेन नहीं आती because I am burping continuously, which looks very odd. अभी डकार मारी मैंने बेशर्मों की तरह. लोग कहते हैं माल मोटा खा लिया. मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हैं. एक चीज़ है about this daddy, people really treat you with a lot of respect because they consider that तुम माँ चोद दोगे सबकी. Sorry for that. But you could create ruckus. Yeah, so stay tuned. Cheers. Hi guys, so very good morning. Almost after a year, I am back here on Amritsar railway station. Time is 8:38 right now, and the estimate time of arrival was 8:35. So 3 minutes का delay is very fine. And yeah, let's see how the day goes ahead. I haven't had brush, didn't slept properly. बस छोड़ो क्या कारण हो. So I'll show you. Cheers. So brush तो कर लिया मैंने इस पे रेलवे स्टेशन पर ही बिकॉज आई कुड सी कि मतलब एक लड़की कर रही थी ब्रश, तो उसको देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था. फिर देखा एक लड़का और निकल के आया जो उसके साथ ही था मे बी, और उधर और भी लोग कर रहे हैं बिकॉज वी आर इंडियंस. सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. नाउ ब्रश करके आई फील मच कम्फर्टेबल. नाउ विल गो टू अमृतसर. मतलब जो बस चलती है इधर से, उधर जा कर के फिर विल हेड बैक टू सराई, जहाँ पे विल गेट डू स्टमक की पूजा इन बोथ द सेंस, ejection and injection as well. So let's see how does it go. Yeah. And I came here to Amritsari Haveli, and this place always makes me feel nostalgic. Doesn't really matter कितनी बार मैं आ जाऊँ, तब क्योंकि पहले भी आ रखा हूँ काफ़ी बार. So it always excites me. So the quality as well as the variety is something really much appreciable. It's also very kind, etc. So you get chai is pending it. So I had puri and chai और मज़ा आ गया. भाई पंजाब की वाइब है, पर अमृतसर की वाइब, अमृतसर की मार्केट की फील लाइक सो लाइवली. खुले बहुत बढ़िया लगता है देख के. वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा, बट doesn't really matter what time of the year you come in Amritsar, you'll always feel exciting. भाई मतलब मज़े ही मज़े. एक
चीज़ होर कहांगा जिद्दां अज 15 अगस्त सी ना तां ही करके अज ट्रैफिक तो है ही पुलिस बैरीगेटिंग बहुत सी एंड अद्धा पुलिस भी बहुत सारी मतलब हुण इन्ना जो चंगा नहीं लग रहा होगा बट इन रियल एंड व्हेन इट्स द पीक आवर इट लुक्स वेरी डिसेंट एंड यू रियली डोंट विश टू गो एल्सवेयर It's always great coming here. Now I will take a dip in this holy water and get ready and so I remember coming here last time and feels nostalgic back again. Last time I wore black turban, this time I'm going for maroon. Let's see how does it look. Also I got this tada to match in the hymn totally. Getting turban then third time. After wearing this turban, I tried dialing 3 people. One, my mother, second, my sister, and third, the lady factor. And guess what? Who would have only picked up my call? The very obvious. Because bebe वगैरह कोई नहीं है. बाकी 2 didn't pick up. क्या करें? Finally able to reach just in front of the bus and it's very always. So as you can see, like the entire corridor is clean, entire premises is clean. It's all of Jal Seva, which is practiced every day after the Qurbani is done. So they bring the water out of the Kund and clean the entire corridor. It's very good to see that how people are engaged into this and everyone know what has to be done. I also saw a little Sardar carrying his own very small bucket and who was also contributing to it. So that was also really good to see. Yeah. So seeing all these things really gives a peace, which we really want in our life. So since I came here and had not booked any hotel this time, so I had just been laying down there in the compound itself. Not compound, like it's a place where they organize all the small events etc. मतलब केवल मैं नहीं सो रहा था और 300-400 लोग सो रहे थे. पहले तो कैसे कहते रहे उठ जाओ जी. Then they started to beat some steel का cut piece और सबको उठा दिया इंक्लूडिंग माई सेल्फ. और इतना मतलब ऐसे उठा दिया जैसे कि बच्चा नींद में और भाई साहब उठा के उसे फेंक दिया पानी में. ऐसे कौन करता है क्या. मैं फिर निकल गया था कीड़ा कूड़ा लब बंदे लगी. व्यू देखो भाई साहब, द एंगल, द फ्रेम, इट्स फिनोमिनल. लेटेस्ट अपडेट, टाइम इज़ अराउंड 5:15 right now. I just had a cold coffee to replenish little bit of my dehydration and I have came here breakfast. So just sit here for a little while because I've been tired and trying to figure out if there is some way I can charge my phone. So my battery is 40%, although I have bought my charger, but वो कैसा ना बैग सबमिट कर रखा है and getting it back and then resubmitting it back in second would be a little mess or headache I could say. और पगड़ी पीछे खोल ली थी मैंने, फिर एक लड़का था उसने दोबारा बांध दी मेरे. He was like कि भैया मैं 50 बांध दी है, this is 50 this अंदर वाला क्लोथ की I'll help you tie this सब कुछ. मैंने कहा ठीक है. So he was like the guy who sells this fridge magnet,
मैं इसको 50 रुपये भी दे दिया. मैंने कहा चलो कोई नहीं. He was really very happy. Now I would be roaming around, and in the evening I'll go back again to Gurdwara Sahib to sit there and absorb the vibe also. मतलब बहुत सारे events are there which keeps on happening. It's just we're not aware कि एक event और होता है in which they showcase all the swords and every ornament which was used during the battle. Not ornament, या उसको क्या बोलते हैं, like तलवार, swords, चक्करी, कटार, वो सब कुछ. तो मतलब see, I have witnessed that once. Like the last time I came in the same schedule. So let's see, इस बार देखूँगा नहीं देखूँगा. I've got no idea. Yeah. Also, I'll be going to Kesar the Dhaba, which is very famous here. It's very old. So shooting that too. So let's see how does it go. Yep. श्री साहेब भाई जेठा जी को हक दिता है. भाई सरन जी छेਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਸਨ. This is very essential to record because this is the very first time I am experiencing this elevator which has Lada reach है. कैसा का ढाबा भाई इधर आने का रास्ता इट्स वेरी सुनसान. मतलब तुम्हें लगेगा कि भाई तुम किसी गलत रास्ते पे तो नहीं हो. लेट मी टेल बैक वन सेकंड बाहर निकल के थोड़ा सा. सो द लास्ट प्लेस दैट आई द लास्ट वीडियो विच वॉज देयर इट वॉज केसर द ढाबा. एंड इधर आने का रास्ता वॉज सो सुनसान दैट यू विल फील लाइक यू हैव लॉस्ट इट. बट व्हेन यू गो देयर यू कुड इमेजिन कि जिन लोगों ने टोकन ले रखा था ऑलरेडी 47 पे चल रहा था. 62 वाले को टोकन तो ही टोल्ड कि कम से कम पौना घंटा मान के लो 45 मिनट्स. तो भैया हमारा तो क्या ही सीन था. तो मैं तो आ ही गया. आई डिड नॉट हैड एनीथिंग देयर. इस गुरुद्वारे के पास ही कुछ खा लेंगे. ट्रैफिक केवल ये ट्रैफिक केवल ढाबे के पास है. बट आने का रास्ता बहुत सुनसान बहुत ज़्यादा. ये देखो आई तो हैव केम बैक हेयर. मतलब थोड़ी मैंने इमेजिन इतनी भीड़ होगी इतनी ज़्यादा भीड़. ये बर्गर पता नहीं यार थोड़ा बैठ के खाऊंगा आराम से कुछ ढंग का. मतलब भाई बट लेकिन सोचने वाली बात है भाई गुरुद्वारे से इतना दूर तो नहीं कह सकते बट मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पे लोकेटेड. और लोग चढ़े हुए हैं भाई साहब गेट पे. दिखाया कितना शोर शराबा पी पॉप बस पूछो मत यार. व्हाट्स गोइंग ऑन. So finally, since I could not find something good, so just came here, sat in some restaurant ऐसे and ordered soup because they don't have anything else. खाना वाना that I don't want to have. I wanted to have Chinese वगैरह वो सब है नहीं but because that's available during breakfast. The railway station, and railway station of Roorkee has changed a lot. It's under redevelopment since past 1 year. I don't know for how long will this continue. So yeah, let's see. Abhi time kya hua hai? Time is 10:55 right now and my train is at 11:20. So I'll have a walk either for a little while. तब तक के लिए तक ट्रेन नहीं आती because I am burping continuously which looks very odd. अभी डकार मारी मैंने बेशर्मों की तरह. लोग कहते हैं माल मोटा खा लिया. मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हैं. बट एक चीज़ है अबाउट दिस दैडी पीपल रियली ट्रीट्स यू विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज दे कंसिडर दैट तुम माँ चोद दोगे सबकी. सॉरी फॉर दैट बट यू कुड क्रिएट रकस. या सो स्टे ट्यून्ड. चीयर्स.